अब हम आर्टिकल 21 का एप्लीकेशन देखेंगे इन वेरियस केसेस। सबसे पहले वी विल सी द केस ऑफ परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट every hospital must provide first aid to every accident victim। अब इसके बाद हमारे सामने सुनील बत्रा का केस आता है। इसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। अब इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट if there is illegal torture in the prison, then in that case writ of habeas corpus can be filed। अब in this case it was held that right to speedy trial is included under Article 21 of Indian Constitution। अब इसके बाद we have the case of PUCL versus यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था that right of food will be included under Article 21 and it will be compulsory। अब इसके बाद we have the case of मुरली ड्योरा versus यूनियन ऑफ इंडिया। अब in this case it was held that smoking in public places is violation of Article 21 of Indian Constitution। अब इसके बाद we have the case of रामलीला मैदान। अब in this case it was held that right to sleep is a fundamental right under Article 21। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि राइट टू डाई को भी हम राइट टू लाइफ में इंक्लूड करेंगे, whether right to die is included in right to life। अब in this case it was held that right to life does not include right to die and section number 309 of IPC was declared to be constitutionally valid। लेकिन इसके बाद we have the case of कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था that in some exceptional circumstances right to die will be included in right to life। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 309 ऑफ आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशेबल बनाया गया था, लेकिन जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, जो हमारी न्यू बीएनएस आई है, यहाँ पे अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऑफेंस नहीं माना गया। तो नाउ वी कैन से दैट इफ अ पर्सन अटेम्प्ट्स टू डाई देन इट विल नॉट बी ऑफेंस। अब हमको याद रखना है that compensation to acid attack victims was also provided in light of Article 21 of Indian Constitution। यहाँ पे हमारे सामने केस आता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब in this particular case Supreme Court gave guidelines to prevent the cases of acid attacks, and the Supreme Court also said that there is a need for rehabilitation of acid attack victims। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था that the acid attack victims must be given OBC reservation। आपको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है कि जो यहाँ पे एसिड की बात करी जा रही है इट इज नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद भी have the case of परिवर्तन केंद्र versus यूनियन ऑफ इंडिया। अब in this particular case Supreme Court directed to implement the guidelines in the Lakshmi case, and इसके बाद section number 326A of IPC and section 326B of IPC were introduced। ये sections specifically acid attack से deal करते हैं, and BNS में आप देखोगे same sections को continue किया गया। Here we have section number 124 of BNS which deals with acid attack cases। इन sections के आने से पहले जो acid attack के cases होते थे it came under grievous hurt। अब हम right to privacy को भी examine करते हैं।
right to privacy. In the K.S. Puttaswamy case, it was held that right to privacy is a fundamental right. Is a fundamental right under Article 21. लेकिन इसकी मुझे जर्नी भी पता होनी चाहिए पुराने केसेस में राइट टू प्रिवेसी के बारे में क्या बोला गया था। सबसे पहले हमारे सामने केस आता है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। It is a 8-judge bench decision. अब in this particular case, Supreme Court held that right to privacy is not included in right to life. Right to privacy is not included in right to life, and hence it is not included under Article 21 of Indian Constitution. अब इस केस के बाद खड़क सिंह का केस आता है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। In this case, Supreme Court recognized the right to privacy as a fundamental right. Recognized the right to privacy as a fundamental right in a limited sense. एक limited way में right to privacy को fundamental right recognize किया गया था। लेकिन in this case, court did not explicitly and clearly held that right to privacy is a fundamental right under Article 21. अब इसके बाद we have the case of PUCL versus Union of India. It is also called telephone tapping case. Up in this case, Supreme Court held that telephone tapping is a violation of Article 21. Is a violation of Article 21 if it is done without the permission of the Home Ministry. अब इसके बाद we have the case of सुरजीत सिंह वर्सेस कमलजीत कौर। अब in this particular case, Supreme Court declared that virginity and paternity tests are illegal as they violate Article 21 of Indian Constitution. And इसके बाद फाइनली हमारे सामने केएस पुट्टास्वामी केस आता है जहां पे बोला गया था that right to privacy is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट माना था। पीटी के हिसाब से आपको ये भी याद रखना है that KS Puttaswamy case was a 9-judge bench decision.